Class, this is Miss Saima. Now the rest of the course will be covered by me. Today I'm going to start the new chapter, virus. And in first lecture we are going to learn about what are viruses, their brief history, their structure, etc. Now, if we talk about virus, as it's a very hot topic nowadays, viral infections and virus, they are very notorious for spreading infections around the world. And certain kinds of epidemics and pandemics happened in the history and in the recent years as well due to viruses. What are they actually? Viruses are infectious particles which are about 100 times smaller than bacteria, and they can only be observed under electron microscope. They are non-cellular structures consisting of a core of DNA or RNA surrounded by a protein coat. As I said earlier, that they have a reputation for being the cause of contagion, and why not? Because they are the cause of widespread epidemics and pandemics throughout the world and in history. If we look in the past, we can see influenza pandemic that happened in 1918 and 1919 that killed 500,000 Americans in just 10 months. Then again in 2009 and 2010, pandemic of H1N1 swine flu has caused about 18,000 deaths in 214 countries around the world. Then 2014 outbreak of Ebola virus that happened in West Africa, and the very new, very current situation of coronavirus, which is known as COVID-19, happened in December 2019, and now it's going on in 2020. The pandemic of coronavirus that has killed almost over 27,000 people around the world, and infected almost more than 500,000 of people around the world. So viruses are non-cellular, as I told you earlier, that but when we are talking about that they are 100 times smaller than bacteria, then uh, we must know how much smaller they are. So if we want to take an estimate of how small they are as compared to bacteria, then we can see different types of viruses. For example, the measles virus that happened to be around 220 nanometer, it is about 8 times smaller than E. coli, the bacteria E. coli. Then hepatitis virus, which is just 45 nanometers around, is about 40 times smaller than E. coli. And if we talk about polio virus, that happened to be 30 nanometer, which is about 10,000 times smaller than a grain of salt. So now you can imagine how small they are. When a virus is completely assembled and is capable of infection, it is known as virion. A single individual particle of a virus about 20 to 250 nanometers in diameter. As I told you earlier that they are non-cellular, so they don't have any nucleus, organelles, or cytoplasm, and they can only become active inside a host cell. Therefore, they may be named as obligate intracellular parasites. They are different from prokaryotic and eukaryotic cells as they contain only one type of nucleic acid, either RNA or DNA, but never both. If you want to look at the structure of virus, you can see this is the rod-like structure. These are tobacco mosaic virus, which was first invented, and it looks like this. सो वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन जो फैल रहा है, और जिस तरह आजकल सिचुएशन है कोरोना वायरस की, उसके हिसाब से आपके दिमाग में यही आता होगा कि एक कॉन्टेजियस डिजीज़ जो एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जा रही है और जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट सी इट विद योर ओपन आइज़, और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बीमारी फैलती जा रही है। एपिडेमिक था पहले, फिर पेंडेमिक बन गया, थ्रू आउट द वर्ल्ड फैलता जा रहा है। तो ये है क्या?
वायरसेस जो हैं हमारे पास वो एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। नॉन सेलुलर इनको हम इस तरह से कहेंगे क्योंकि दे आर नॉट एक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल के अंदर आते हैं तभी इनके अंदर जो है इनकी एक्टिविटी होती है, तब ये रेप्लिकेट करते हैं, तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करते हुए। इनके अंदर बेसिक जो, अगर हम प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया के एग्जांपल लें या यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल लें, तो इनके पास डिफरेंट ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गए, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गए जो आपकी एटीपी प्रोडक्शन करवाता है, इस तरह की, और न्यूक्लियस बेसिकली। सो ये दे लैक ऑल दीज ऑर्गेनेल्स, ओनली दे कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स एंड समटाइम्स थ्री। तो उनके साथ जो है ये मिलकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बट आउटसाइड द लिविंग बॉडी इन ये कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। और जब ये वंस इनसाइड द लिविंग बॉडी आ जाते हैं तो फिर ये एक तरह के पैरासाइट बन जाते हैं। तो इसलिए हम इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। दे एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास कोई यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है, तो उसमें हमारे पास दोनों तरह के स्ट्रैंड्स या न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों। लेकिन वायरसेस इसी जगह लैग करते हैं, इनके पास कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो आरएनए या फिर डीएनए। नाउ वी मस्ट नो अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री कि इनकी इन्वेंशन कैसे हुई, हाउ पीपल come to know about them, and who discovered them earlier. So towards the end of 19th century it was thought that bacteria are the cause of most infectious diseases. However, when it comes to the troubling disease in tobacco plant, and in tobacco, researchers found that they cannot isolate any kind of bacteria which was causing that certain type of tobacco disease in tobacco plants. The leaves of the plant wilt and they become yellowish, and then it was the plant die ultimately. So there was no cause of that disease. Nobody was able to isolate any kind of bacteria, and the bacteria that were known at that time, when people tried different types of bacteria and injected them into a healthy plant, they did not observe that a particular disease which was happening at that time. So in 1886, a German chemist and agricultural researcher, Adolf Mayer, published the result of his experiments, extensive experiments, in a paper, and it showed that when he crushed up the infected leaves and injected the juice of leaves in healthy plants, they turned up with the same disease. He couldn't find any known bacteria to be the cause of that disease, and neither he can isolate any bacteria from that diseased plant. So it was just like that something which is being soluble in that filtrate is causing the disease. But in 1892, a Russian student named Dmitry Ivanovsky, he repeated the experiment of Adolf Mayer, but with a twist. In 1972, an article was published in Bacteriological Reviews, and it showed that Ivanovsky passed the juice from infected leaves through a Chamberlain filter, a filter that was fine enough to capture bacteria and other known microorganisms. Despite the filtering, the filtrate remained infectious. So he concluded that the filtrate may contain soluble toxins, or what we say filtrable bacteria. It was not until 1898 when the presence of viruses was acknowledged. A Dutch scientist, Martinus Beijerinck, while confirming Ivanovsky results, suggested that the cause of tobacco mosaic disease was due to
due to living liquid virus, referring to the term filterable viruses. And it was many years before it was proven that these agents were not simply bacteria but infectious particles which are so tiny that they cannot be seen without a microscope. You cannot see them with a simple microscope, so by the invention of electron microscope it was possible to observe virus in 1939. The first images taken by German scientists Ernest Ruska and Max Knoll was of tobacco mosaic virus, which looks like this. You can see small rods like this. हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जैसे आपको बताया मैंने, एक टाइमलाइन है उसके तहत अगर आप देखें तो ये लेट 19th सेंचुरी में जो ये वायरस जो है वो डिस्कवर हुए, और उस वक्त भी वो पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुए थे, बट एक तरह की ख्याल था कि समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग डिजीज़ अमंग प्लांट्स. उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं, जैसे 1886 में जर्मन ये साइंटिस्ट, केमिस्ट थे और एग्रीकल्चरल रिसर्चर थे, इन्होंने जो है ऑब्ज़र्व किया कि जो टोबैको प्लांट में एक डिज़ीज़ कॉज हो रही है ये किसी वजह से. उन्होंने इन्फेक्शस लीव्स को उनको लगता था कि ये लीव्स की वजह से ही कोई प्रॉब्लम है, तो जब लीव्स को क्रश किया उन्होंने और उसको हेल्दी प्लांट में उसके जूस को इंजेक्ट किया तो वही डिज़ीज़ उस दूसरे प्लांट में भी आ गई. बट उनके ख्याल से उन्होंने यही कंक्लूड किया कि ये कोई बैक्टीरिया है जो ये काम कर रहा है. उसके बाद लेट इन 1892 एक रशियन स्टूडेंट थे दिमित्री आइवानोस्की, इन्होंने यही जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये किया उन्होंने कि उस एक्सट्रैक्ट को जो लीव्स, इन्फेक्टेड लीव्स से निकाला, उसको फ़िल्टर किया चैम्बरलेन फ़िल्टर से. चैम्बरलेन फ़िल्टर ख़ास टाइप का फ़िल्टर होता है जो कि बैक्टीरिया के, यानी इतने फाइन उसमें पोर्स होते हैं कि वो बैक्टीरिया को रिटेन कर सकता है. अगेन फ़िल्टर करने के बावजूद जब वो फिल्ट्रेट आया तो उसको जब इंजेक्ट किया गया हेल्दी प्लांट में तो वही डिज़ीज़ दोबारा कॉज हुई प्लांट्स के अंदर. तो ये इससे ये प्रूव हो गया कि जो चीज़ कॉज कर रही है वो उसी एक्सट्रैक्ट के अंदर मौजूद है, डिज़ीज़ कॉजिंग एक्सट्रैक्ट के अंदर मौजूद है, डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. बट अगेन उनका भी यही ख्याल था कि ये कोई टॉक्सिन है जो सॉलेबल है, और ये समझ नहीं आई कि ये वायरस है. जब तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता और पता ये चलता कि देखने के बाद कि आप उसको देख सकते हैं, तो उससे पहले एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंफर्म किया आइवानोस्की के रिजल्ट्स को, मार्टिनस बेजरिंग ने, और उन्होंने ये बताया कि ये कोई फिल्ट्रेबल वायरस है. और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट रस्का और मैक्स नॉल जो थे, उन्होंने फर्स्ट इमेजेस ली टोबैको मोज़ाइक वायरस की, जिसकी आपको पिक्चर यहाँ दिखाई मैंने. इट लुक्स लाइक दिस, रॉड लाइक. ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी इसको अगर हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो इट लुक्स लाइक दिस. Now if we talk about a structure of viruses. Viruses state around the borderline of what is considered as life. अब ये एक क्वेश्चन है कि हम लाइफ किसको कंसिडर करते हैं. लाइफ हमारे जहन में क्या है? लाइफ है कि जो चीज़ें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकती हैं, जो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकती हैं, जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ ग्रो कर सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम एज अ लाइफ कंसिडर करते हैं. तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट जो आपकी लाइफ का है, या तो डीएनए या आरएनए, वो तो मौजूद है वायरस के पास, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि दे डोंट हैव द मशीनरी, द यू कैन से द
एनर्जी प्रोड्यूसर, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, तो दे डोंट हैव दैट मशीनरी विच इज़ रिक्वायर्ड to independently read the information contained in those nucleic acids. So that's why they require the cellular components of their host cell to be able to read that information and then convert them or replicate them into different viral genomes. Viruses are composed of two main components. First one is nucleic acids, which is also known as genome. The other one is capsids. Another structure that is found in some of the viruses is envelope. It may or may not be present in a viral cell. So the genome or the nucleic acid, it contains either RNA or DNA, but never both. The nucleic acid may be single stranded, यानी एक thread होगी, or double stranded form. Usually the nucleic acid is unbroken, but in some cases it is divided into segments. जैसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस को देखें तो वो segmented होता है. Then the capsid protects the genome. जो भी उसका genome हो, चाहे वो RNA हो, चाहे वो DNA हो, उसको protect कौन करता है? कैप्सिड करता है. और ये जो है हर वायरस को उसकी पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करता है. द कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड द कैप्सोमियर्स. कैप्सोमियर्स एंड उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द सिमेट्री टू वायरल शेप. डिफरेंट तरह के कैप्सोमियर्स डिफरेंट तरह की सिमेट्री देते हैं वायरल सेल को, और उससे जो है इनकी पर्टिकुलर शेप बनती है. कैप्सोमियर जो है, कुछ कैप्सोमियर्स जो हैं वो सिर्फ सिंगल प्रोटीन के भी बने हुए होते हैं, एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन द टाइप ऑफ वायरस. द नंबर ऑफ कैप्सोमियर and the type of protein is a characteristic of a particular virus. For example, 162 capsomeres make up the capsid of herpes virus, and 252 capsomeres compose the capsid in adenoviruses. Many viruses contain a surrounded membrane called the envelope. Envelope is made up of lipids and proteins, and it resembles the host cell membrane. It is a typical bilayer membrane outside the capsid. So the virus acquires that envelope when they assemble in the host cell or when they burst to move through from the cells. So those viruses which lack envelopes or which do not have envelopes, they are considered as naked or non-enveloped viruses. Composition of the envelope. The composition of the envelope generally is determined by the viral nucleic acid and by the substances that it derives from the host membrane. Combinations of lipids, proteins, carbohydrates make up most of the envelopes, and sometimes it may have projections like this. If we look at the picture, this is the picture now you can see here. This is the nucleic acid, DNA, okay, which is being covered by a capsid, and this capsid has many capsomeres. These small ring-like structures, these are capsomeres, and now it is being surrounded by an envelope, and here you can see projections. These are spikes. So these may or may not extend from the viral envelope, but these surface projections, they are made of glycoproteins, and they help to attach the virions to specific receptor sites on host cells. In certain viruses, the possession of spikes causes various types of red blood cells to clump together, which is known as hemagglutinin, and this is a property which can be used to identify the virus. What the things that come if
this nucleic acid or this genome is being protected by capsomere, then how come that this envelope is another protective layer or coat being able to protect the virus? There is sometimes you can say that it has an advantage or added advantage, because it the envelope is being derived from the host cells nutrients, और उनके अंदर जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, अवेलेबल उनकी जो कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, उनको यूज़ करते हुए ये एनवेलप वायरस बनाता है. तो ये समटाइम्स ये क्या करता है, क्योंकि होस्ट सेल की ही चीज़ों से ये एनवेलप बन रहा है, तो ये एक तरह की जो इम्यून सिस्टम है आपका, उसके अटैक से महफूज हो जाता है, या आप एक तरह से समझ लें कि कैमोफ्लाज कर लेता है अपने आप को. एंड दीज एनवेलप्स हेल्प वायरसेस to infect new cells by fusion or fusing with the host cell or plasma membrane. क्योंकि ये उसी से डिराइव हुए हैं, तो ये आराम से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल के अंदर फ्यूज़ हो सकते हैं, और वहाँ से ये उस नेबरिंग सेल को या नेबरिंग टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. However, there is another, you can say, on the other hand, enveloped viruses are damaged easily. Why they are damaged easily? क्योंकि environmental conditions जो है, जो normal membranes को destroy कर देती हैं, जैसे increased temperature हो गई, freezing thawing हो गई, या pH ऐसा हो गया कोई 6 या above 8, या कोई ऐसे सॉल्वेंट्स जो लिपिड को डिज़ोल्व कर लेते हैं, या ऐसे केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिनोल हो गए, ये सब एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और जब ये एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दैन जो वायरस होता है इट इज़ वल्नरेबल, और ये भी आराम से आप इसको किल कर सकते हैं. नेकेड वायरसेस जैसे आपको एबोला वायरस नज़र आ रहा है, इट डजंट हैव एनी envelope, they're generally more resistant to such environmental conditions. So the first lecture is being done. Now we'll discuss types of viruses according to their DNA or RNA in the next lecture. Thank you.